Hello guys, this is Dr. Karn. As you know, there are many senseless things on YouTube and we aim to build some value. So इसी के साथ में एक वीडियो है जिसमें बोला 15 रूल्स ऑफ पॉवर्टी एंड इस वीडियो को देखने का एंड साथ में डिस्कस करने का एम ये है सिंपली जो चीज़ें हम जानते हैं उससे कुछ चीज़ें बियॉन्ड जानने की कोशिश करें जो कि एक व्यूअर्स के तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लग सकता है एंड ये आपकी जो रियलिटी है उसको थोड़ा सा अलग हिट करेगा. So with that message, we have some 15 rules of poverty. That is alux.com and इनका जो कंटेंट काफ़ी अच्छा आता है, मैंने देखा है. बट ये जो इमेज है जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन करते हैं वो थोड़ा सा डिप्रेसिव है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी के अंदर कहाँ से मैच होती नहीं होती है. सो विद दैट मैसेज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज एट द एंड इट्स द वैल्यूज वी गेट फ्रॉम कंज्यूम फ्रॉम यूट्यूब और समवेयर एल्स, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा वास्ट है जो कि कोई काम का नहीं है. सो लेट्स गो. The bottom 20% of any society in terms of living standards qualifies as poor. In the same way the top 20% qualifies as rich and everyone else in different levels of wealth are in the middle class. There are certain rules that dictate who will end up in the bottom 20%. In this video, we're going to take a look at what governs poverty and why some people cannot seem to escape it. So with that said, here are the 15 rules of poverty. Welcome to Alux, the place where future billionaires come to get inspired. Number 1. Poverty is 50% circumstances, 50% acceptance of those circumstances as unchangeable. Now, people who believe their destiny is to suffer do nothing to stop it. They simply accept that their life is supposed to be the way it is. Maybe they tried once and failed. Maybe the cards were stacked so much against them that there's nothing they feel like they can do. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिटरली यार. If you're sitting at the bottom, there's nowhere to go but up, okay? Change your circumstances by first changing the way you think about what your life is supposed to be. Follow through सबसे with बड़ी small चीज चैलेंज होता है ये. and soon you'll see that life gets better when you get better. Number 2. यार ये चीज़ हमेशा होती है. आपने सुना होगा कि हाथी होता है, जैसे बोलते हैं ना छोटा बच्चा, उसको छोटे से मतलब बचपन से उसको ना बांध दिया जाता है, वो बड़े होने के बाद उस छोटे से जो पतली सी जंजीर है या पतली सी रस्सी होती है उसको तोड़ नहीं पाता. एंड ये चीज़ होती है काफ़ी हद तक. आपका जो माइंड के अंदर जो पहले से जो इमेज होती है ना किसी भी चीज़ को लेकर, वो कभी चेंज नहीं हो पाती है. बहुत रेजिस्टेंस डेवलप करना पड़ता है या फिर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे. बाकी वो ऑल ऑफ सडन आप चेंज नहीं कर सकते हो. आप एक दो ट्राई करने के बाद भूल जाओगे. एंड मोस्ट प्रॉब्लम जो मेनली प्रॉब्लम है वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस को लेकर है. आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरी नियति है. वाट मीन द टर्म बोलते हैं ना नियति, ये चीज़ एक्चुअल में काफ़ी बड़ी मेजर कारण है जो कि पॉवर्टी या कोई मतलब किसी क्लास में बिलोंग करता है इसलिए होती है. Being broke and being poor are two different states of being. You can be broke many times in life, but being poor is deeper than money. People in poverty have no hope. They lose it. They lack faith in their ability to write their own future. They lack the will to push forward. A person can escape being broke many times, but if you end up poor and accept it, there's little that can be done for you. Unfortunately, too many people grow up without understanding the distinction between these two states, with parents brainwashing their kids into believing they're poor when in reality, the children can only be broke. For them, money is associated with greed and the lack of it with some kind of delusional pride. ये बिल्कुल सही बात है. ये बिल्कुल सही बात है. लोगों को लगता है कि we are not rich person, that means we are not doing something that is illegal or like we are मतलब हमारा पैसा नहीं है तो एक तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास प्राइड है कि हमने पैसा नहीं कमाया, हमने खुशियाँ कमाई है. बट खुशियाँ भी कहाँ है. एक्चुअली मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा पर्सपेक्टिव है एंड ये वेरी कर सकता है. बट एट द एंड वी आर ट्राइंग टू ओपन अवर माइंड. इसलिए तो ये चीज़ ऐसी लगती है कि आप लोगों को कि यार अपन मतलब कि गरीब हैं तो उसमें मतलब प्राइड है, हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, खुश हैं लाइफ में, ऐसा कुछ लगता है. बट क्या सच में ऐसा है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता? Okay, if you are poor, you can't take care of yourself and those you love, not to mention helping the world to move forward. Number 3. Educated people take advantage of uneducated people the same way the strong used to persecute the weak. ये ground reality है. And across all species, we've seen the formation of hierarchies. The strongest lion mates with all the females in the pride. The most social chimp leads the pack. And in the case of humans, the stronger armies take from the weak.
time passed and the sword and shield were replaced by the pen and the book, and today by your ability to navigate the internet. Poor people are not poor because they don't have the potential to escape poverty. They simply don't have the education or the tools to do so. They lack the understanding and the systems needed to pull a community together toward a common goal. Today, the ability to leverage knowledge over someone else determines the hierarchy of power because our society is predicted on this. If you look at the most powerful people in the world, these are not Olympic athletes. They are educated. They create the opportunities for everyone else, and life rewards those who create opportunities. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब एजुकेशन इज नॉट ओनली द थिंग. एक्चुअली में जो स्किल होती है कि एजुकेटेड काफ़ी लोग हैं, बट एजुकेशन में उनको ये चीज़ बताई गई है कि वी आर हियर टू वर्क अंडर द सिस्टम. हमें गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. इस टाइप की मतलब होती है. आपने अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो वो पता होगा कि जो रिच डैड थे उनको ये कहना था कि योर फादर इज़ एजुकेटेड बट नॉट स्किल्ड. एंड वो जो मतलब उसके जो रिच डैड थे, ही इज़ स्किल्ड बट नॉट एजुकेटेड बट दे आर स्किल्ड. उनको पता था कि एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसको किस तरह डील करना होता है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट कनिंगली उनको कर रही होती है. तो इन सबको देखना पड़ता है. एंड एट द एंड मतलब कि स्किल आप में इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप जो अपनी एजुकेशन को कर सकते हो. और एंड आपको पता होगा कि आज के टाइम पे अगर यूट्यूब या कोई इंटरनेट है तो ये चीज़ सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कि वरदान है. एंड मतलब कि एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सब कुछ यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें फ्री है अगर आप रियली में लाइफ में कुछ करना चाहते हो. आपने शार्क टैंक के कुछ एपिसोड देखे होंगे जहाँ पे एक आदमी आया था, उसने ऊबर टाइप में एक प्रोजेक्ट बनाया था यूपी के अंदर. एंड उसने खुद कहा था मैंने ऐप डेवलपमेंट जो भी उसने किया था सीखा था वो यूट्यूब से फ्री में सीखा है. एंड और बहुत सारे एग्जांपल हैं. आपसे बताऊँ अगर एलोन मस्क का भी नाम सुना होगा. मैंने ये पढ़ा है, अब मे भी गलत हो सकता है, सच भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली है, रॉकेट साइंस उन्होंने खुद ने पढ़ी है. तो ऑब्वियस बात है कि एंडलेस सोर्स आपके पास अवेलेबल है. जस्ट यू हैव टू ग्रैब दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि हम हमारा जो एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है उसको ब्रेक करके बाहर निकल सकते हैं. एंड हमारा कम्युनिटी का एक गोल हो सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग बनना. Can't teach their children how to be rich. They simply don't know how, because if they did, they would have done it themselves. Yet parents still want to teach their kids the things they themselves find valuable, but the difference is those lessons are about survival at the bottom. This is what leads to generational poverty. This happens when each generation makes sure to sabotage the next one, either through a lack of proper development, through negative influence, and in some cases, just pride. There's something interesting that we've seen in poor communities that we want to share with you. It's this concept of a lottery child. Basically, you make as many children as you can in the hopes that one of them will make it and will take care of everyone else. What these people don't understand is that the race for a lottery child condemns the rest of them to a life of poverty. बिल्कुल ये चीज़ होती है. In the hopes of having one child that gets into the middle class, people are having up to 10 kids. The sum need of resources for the remaining 9 of them dramatically outweighs the earning power of the one that made it. If you want to know what rich parents are teaching their kids, click in the top right corner and watch our video that we did specifically on एक्चुअल में ऐसा मतलब आपने पढ़ा होगा, संदीप महेश्वरी की वीडियो थी, उसमें ये बताया जाता है कि जैसे 4 लोगों की फैमिली मतलब है 4 मेंबर्स है फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली काइंड ऑफ. तो वहाँ पे ऐसा होता है कि बोला गया कि मैं 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ, मेरे फादर कमा रहे हैं बट मेरे दोनों भाई या मेरी मदर नहीं कमा रही है. तो उनको लगता है कि हम लाइफ में मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, हम अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं एज अ कॉमन जो 2nd 3rd ईयर सिटी के अंदर मोर देन इनफ उनको लगता है. बट एट द एंड मिडिल क्लास और जो आप हायर क्लास में बिलोंग करते हो उस पर डिपेंड करता है. वहाँ पे ये डिपेंड करता है कि चारों लोगों की इनकम क्या है एंड उसको बाद में चारों से डिवाइड करोगे आप, मतलब जितने मेंबर्स हैं. फिर आपको पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी की हमारी जो इनकम है सिर्फ 20,000 ही बची है. एंड दैट्स वेयर वी अंडरस्टैंड क्लासेस का मतलब क्या होता है. थोड़ा सा ऐसा कुछ था, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से जैसे भी इसको समझा सकता हूँ मैं. सो ये चीज़ होती है. आपको लगता है कि ये लाइफ 10 जनों में से एक अगर आगे बढ़ जाएगा तो 9 को पुल कर लेगा, बट लिटरली 9 को पुल करने के लिए उसके बाद एक पास इतना पैसा है खुद के लिए, बट 9 को पुल करने के लिए नहीं हो सकता है. Lessons that make the biggest difference. Number 5. The hardest working person in the world likely lives in poverty. This is one of those things that people in the middle and top get wrong about those less fortunate than them. Some people believe all you have to do to escape poverty is work hard, but nothing can be further from the truth.
Hard work gets you fed just for the day, but to escape poverty, you need more than that. You see, wealth, or the lack of it, is a result of your ability to use the tools you have at your disposal. The problem arises when there isn't proper access to the tools required to escape poverty. If hard work was all it took to be wealthy, the richest people in the world would be the children working in the cobalt mines that get you your iPhone. Number दैट्स 6. रियली Poverty बिगेस्ट मतलब कि एक चीज़ है जो कि सोसाइटी के लेवल पे हमें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस. एंड अगर ऐसा होता तो सच में जो एनिमल में बोलते हैं ना कि गधा डोंकी होता तो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता, वो मुझे अचीव कर रहा होता सबसे ज़्यादा, बट ऐसा नहीं होता. आपसे भी पता है कि ये चीज़ नहीं, मतलब कि आप हार्डवर्क इन द सेंस, अगर मैं मेरे हिसाब से समझाऊँ, हो सकता है वो गलत भी हो. एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि हम IAS की UPSC तैयारी करते हैं, 5 साल 6 साल निकाल देते हैं, अपने जीवन के इंपॉर्टेंट साल निकालते हैं, एंड बिल्कुल रैट रेस एक तरीके से चल रही होती है. तो उससे मैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप 6 साल बाद जाके बन रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, आपकी सैलरी होगी 1 लाख 2 लाख जो भी है. मतलब कि इनकेस ऑफ डॉक्टर में बताऊँ मैं, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है एंड काफ़ी टाइम अपना दे रहा है, एंड उसके बाद जाके वो डॉक्टर के लिए नीट UG में क्वालिफाई कर लेता है, एंड उसके बाद जाके 5 साल 5.5 साल और लगते हैं. अब सोचिए, उसने अपने जीवन का 10 साल दिया है. अगर मान लो इनकेस कोई वो छोटा सा काम भी चालू कर देता, 10,000 से भी चालू करता, एंड ऑब्वियस बात है कंपनी में ये चीज़ होती है कि आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको इनकम भी बढ़ती रहती है, और अगर सेम कंपनी में तो आप स्विच कर करके आप जा सकते हो. तो ये सोचिए, अगर 8 साल के अंदर वो बंदा 1 लाख तक भी जा सकता था. एंड ये चीज़ है कि आपने 8 साल तक हमने कमाया भी बहुत कुछ है, और एक आदमी जो कि MBBS करने में उसको 8 साल लग गए, उसके बाद वो अर्निंग शुरू करेगा, तो ये भी 1 लाख से शुरू कर सकता है, बट एट द एंड उसकी स्टैगनेंट हो जाएगी ग्रोथ, और कुछ टाइम बाद ही उसका प्रमोशन होगा, मतलब एक तरीके से स्टैगनेंट रहने वाली काफ़ी टाइम तक. बट सेम पर्सन जो कि एक्सपीरियंस बना है, 1 लाख तक पहुंचा है, तो उसके बाद और भी आगे स्कोप है. एंड दैट्स वेयर थोड़ा बहुत समझ में चीज़ें आपको थोड़ा सा आपको मॉड्यूलेट करके इस तरीके से समझना होता है इस चीज़ को. तो बेसिकली एट द एंड मतलब कि रेट रेस कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप जो हार्डवर्क के चक्कर में आप पढ़ रहे हो ना, हार्डवर्क के चक्कर में, तो ये चीज़ सभी कर रहे होते हैं, एंड सभी कर रहे होते, तो वहाँ पे ऑब्वियस बातें डिमांड एंड सप्लाई जोन वाली बातें आ जाती हैं. Wires company. If there's one universal rule that applies to everything, it's that similar individuals gravitate toward one another. Why? Well, they share the same struggles. Common enemies or common difficulties bring people together. This is true for both those who've made it and those who haven't. The rich come together to find new ways to make themselves even richer, while the poor come together to look down on those even poorer than them. Number 7. The poor. मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि अंबानी जी के बारे में तो बोलता ना है कि जो धीरू भाई अंबानी जी थे, एंड उन्होंने एक्चुअल में वो जाके चाय पीने के लिए, सिर्फ महंगी चाय पी के वो रेस्टोरेंट में जाके बैठते थे, ताकि वहाँ पे कंपनी के जो बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर्स है वहाँ पे वो बैठे, एंड वहाँ पे वो डिस्कशन करें, उनके साथ में पॉइंट ऑफ व्यू जानना होता है. तो ये एक्चुअली यही होता है जो कि सराउंडिंग से आपका अफेक्ट होता है. सपोजिटली लाइक सिंपल एग्जांपल है जो कई बार बोलने को बताता हूँ मैं लोगों को, कि आप अगर मैथ्स में अगर वीक हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग में बच्चे कैसे हैं, आपका शुरू से बिल्डअप कैसा है मैथ को लेके. अगर आप सराउंडेड है इंटेलिजेंट पीपल से, देन यू विल थिंक यार मगर मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब तो कर ही रहे हैं, आपका माइंडसेट ये होगा. एंड अगर आप सिमिलरली जो वीक स्टूडेंट उनके साथ घूमोगे या पर रहोगे, तो उनको लगता है कि यार ये भी इससे भी नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो रहा, एंड किसी से नहीं हो पा रहा है वो चीज़ें. एंड समवेयर मतलब एग्जांपल मैंने परफेक्ट नहीं दिया है, बट आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कहीं ना कहीं से कि ये चीज़ होती है कि सराउंडिंग में डायरेक्ट अफेक्ट करता है अपना, आपके जो माइंड मेकअप होता है वो आपका इस तरीके से काम करता है. To others to help, but never to themselves. Now, the paradox of this situation is you can't help those who don't want to help themselves. Getting out of poverty is a combination of many factors, and you can only do it when opportunity meets preparation. People walk out of poverty every day, yet most poor people still wish someone would just pull them out of it. It's up to you, Aluxer. You need to take your education into your own hands here, and we would love to help you do just that. We designed the Alux app for exactly this reason, to be the resource that will help you break free from poverty and build true financial independence.
Through our daily coaching sessions and collections भाई ये भी presented जानना by कोर्स industry हमेशा experts, you're getting सोच समझ के high-value सिलेक्ट किया करो, membership for the cost of क्योंकि one nice meal at a good आपकी जो एक्सपेक्टेशन restaurant. होती है But the उसको वो return मैच on नहीं that करेगा मोस्ट ऑफ टाइम। investment? Well, if you take it बहुत seriously, कम the बार ऐसा app होगा कि आपकी pays for एक्सपेक्टेशन itself मैच कर within the पाएगी। first जैसे कोई month सोचता है कि alone, एडिटिंग and सीख no लूंगा matter इससे what मैं, या happens ये in the वाला कोर्स ले market, लूंगा you मैं, will लाइफ में अचीव never कर लूंगा, lose the wisdom you बहुत gain. कुछ कर लूंगा लाइफ में, मैं रिच बन See जाऊंगा, the बट ऐसा नहीं video? होता है। If you download the Alux app and scan this क्योंकि QR code on screen, ऐसा you'll बोलते हैं get ना, नीट के टाइम में मैंने सुना था कि जो आपको स्टडी मटेरियल जितना प्रोवाइड किया जा रहा है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो सभी के लिए है। इसका मतलब है कि स्टडी मटेरियल के पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सक्सेस की गारंटी, आपकी सिलेक्शन की गारंटी 100% हो जाएगी। इसके बदले आपको ये चीज़ होना चाहिए कि आप उस चीज़ से कितना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स पोटेंशियल से आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। 55% off the annual membership. I'll see you on the inside. Number 8. Poverty ties you with more than one chain. Now this one expands on a point that we made earlier. You need to free yourself from every chain keeping you in poverty if you want to escape it. The most common chains are family and a lack of parental guidance, education, infrastructure, like basic utilities or access to financial instruments like banks, geography, health, a lack of early employment opportunities, and addiction. As long as you still have one chain locking you in, there's no way for you to run toward that horizon. Number 9. Good luck and poverty go hand in hand. Now this is a big one, as most people in poverty believe that getting out of poverty is only a matter of luck and luck alone. Although they might have ended up where they are because of luck, or better said, the lack of it, the way out does follow a different formula. So here's an interesting observation that we've made. Poor people want to be rich instead of not wanting to be poor anymore. This is mind-blowing because poor people don't see success in jumping one social class at a time. So if they can't be rich, they'd rather not try at all. This is the main reason why they buy scratch tickets or play the lotto or wait for an inheritance. Hit the casino. इसके पास मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने रियल लाइफ में देखा है कि वो एक तरह से बैटिंग ऐप में जिस तरीके से आपको वादे किए जाते हैं ना कि 2 करोड़ रुपए जब जीत जाओगे 1 रुपए से पूरा तो लाइफ चेंज जाएगी। इसके ग्राउंड रियलिटी कितनी सही है आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को लेकर। एंड मतलब वो मानते हैं कि गुड एक लक चाहिए होता है, लक फैक्टर अब मैं नहीं काम करेगा तो मैं लाइफ में कुछ अच्छी नहीं करूँगा। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक अंधेरे में 10 तीर चलाते हैं, एक तो लगेगा, ये वाला जो थॉट होता है ना, ये चीज़ होती है। To go from 0 to 100 really quick. Fix the things that you can fix one by one, and you will see your life continue to get better. Number 10. Entertainment is how the rich keep the poor docile. Now, as long as they're fed and entertained, people believe their life is going well. It's one of the illusions of power and one of the biggest chains keeping people in poverty. Give them bread and circuses, and they'll never revolt. How much did we really change in the last 2 millennia since Juvenal said those words? We built more coliseums to hold more people, and now entertainment is in everyone's home. You're playing FIFA, Rocket League, Fortnite, Dota 2 just to feel like a gladiator, but do it at your own expense, okay? You're watching Keeping Up with the Kardashians or The Big Bang Theory the same way the ancient Romans watched slaves being thrown to the lions. You know it doesn't do much for your current reality, but a good distraction is always welcome, isn't it? Empty entertainment is a form of addiction that takes years out of your life without you even knowing it. Number 11. बहुत बड़ा मतलब एक पॉइंट बोला है इन्होंने, समझाया है कि ये चीज़ होती है कि आपने एक रिसेंटली एक मूवी आई थी UI करके, उपेंद्र सर की, उन्होंने शायद इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था। मैंने मूवी देखी नहीं थी क्योंकि जो थोड़ा डार्क मूवीज़ होती है ना मैं उनको नहीं देखता हूँ, एंड खासकर चमड़ी मैटर है वो भी मैं अवॉइड करता हूँ। चमड़ी मैटर आपको पता चल जाएगा यूट्यूब में पता करेंगे तो ये चीज़ इसमें होता है कि गवर्नमेंट या कोई भी मतलब है उनको ये होता है कि इनको माइंड के लेवल प्लेजर दिया जाए एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग, वो चाहे आपको इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे रील्स हो या टिकटॉक हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, किसी भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो आपको लगाएगा कि मेरे पास सफिशिएंट सब कुछ है, लाइफ में मैं सब कुछ अचीव कर चुका हूँ, वो आपको सेंस करवाएगा। एंड ग्राउंड रियलिटी आप बाहर निकल के देखोगे तो ग्राउंड रियलिटी थोड़ा सा अलग है, इट्स जस्ट एन एम्प्टी एंटरटेनमेंट। Money flees the hands that don't work for it. Have you ever noticed how those who are bad with money can never seem to keep a hold of it?
even if fortune hits them right in the face, it only takes a couple of years for them to get back to the place they started in. This is because money doesn't like people who didn't work for it, so they flee and find new owners. When you bring it all together, this is one of the fundamental reasons why money doesn't solve poverty. A study on UBI, or Universal Basic Income, done in Finland over 2 years, where they gave €560 every single month with no strings attached to people, it had seen no real improvement in their ability to get their lives together. And while people on the basic income were more likely to be employed, the difference was small. You see, money solves money problems, but poverty isn't a money problem because the money you can give is always finite. Instead, poverty is an infrastructure and opportunity problem. Give the people the option to get educated, give them the opportunity to participate in the marketplace, and everyone should be able to take care of themselves. Now, here are 2 great books that we can't stop recommending to everyone. Okay? For people who are looking to get out of poverty, The Richest Man in Babylon. For people who are not poor but want to understand what it takes to jump from one social class to another, Factfulness. If you've read one of them, get the other, and if you haven't read either of them, read both. Number 12. Debt and consumerism are the modern versions of slavery. So think about it like this. If dollars were seen as freedom points, you would look at the world differently. Since slavery is illegal, society's been looking for ways to steadily increase productivity without crossing that line. But you can bet they came very close to it. Being alive is no longer free. In modern society, you never really own anything. Even the people who are able to fully pay off their house are not complete owners of it. The government still charges you rent for you to live in the house that you purchased. They call it property tax. The moment you're born, you're put on a treadmill and told to run. They put carrots on a stick and dangle it in front of your face to keep you motivated. That new iPhone, the Balenciaga sneakers, the gold chain, the house with a view. These are all carrots meant to keep you pushing that treadmill forward. They try to own you through debt as soon as they legally can. Most people in the US end up in debt before they're old enough to drink. Most of them spend the rest of their lives trying to repay it. When the main focus of your existence is paying off the fruits of your labor to somebody else, isn't that just another form of slavery? Yeah, we think so. गवर्नमेंट में ऐसा होता ही है कि आपको जो लोगों को लगता है कि मैं लाइफ में कुछ बना सकता हूँ या फिर कुछ मैं अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ, वो सिर्फ डेप्थ लेके कर सकता हूँ मैं. एंड ऐसा होता है कि वो पोजीशन में कुछ अचीव करने से पहले वो डेप्थ में चल जाते हैं. एंड अगेन फिर वो साइकिल हो जाती है आपकी. एक बंधन में रहते हो आप किसी काम के लिए. सपोज आप एक कोई जॉब कर रहे हो एंड आप उस चीज़ के बाहर निकल के आप कुछ ना कुछ रिस्क लेके ट्राई करना चाहते हो, बट आपसे जुड़ा हुआ पहले जो डेप्थ होता है वो आपको वो फ्रीडम नहीं देगा उससे आप बाहर निकलने के लिए, कि आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए रुक सकती है, उसकी पेमेंट आपके लिए रुक सकती है, इसलिए आप कभी उस चीज़ को बैरियर को तोड़ने की कोशिश नहीं करते हो. Poor is the most expensive thing a person could be. Now, most people don't understand just how expensive it is to be poor. A single unforeseeable expense completely crushes your world. Some of you might be wondering right now, how come it's so expensive to be poor when being poor means you have no money? Well, look at it this way, okay? You don't have money to fix a cavity, so you ignore it. That tooth gets compromised, and now you have to get an implant or just have it pulled. The cavity fix was a couple of $100. The implant is a couple of $1,000. ये चीज़ होती है यार. ये इसके बारे में बताऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें. Financially, but there isn't enough money in your account to cover the fee. In this case, being poor literally is costing you money. Because you've got no money in your account and you lack good prospects, that bank is not going to issue you a standard loan, so what's left to do here? You take out a payday loan with an interest 10 times higher than the bank would normally have charged you. We could keep going on with this example for days, all right? It costs you more to be poor. This rule is as old as history. It even shows up in the Bible under Matthew with a slightly different wording. Whoever has been given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they will have will be taken from them. The rich keep getting richer, while the poor keep getting poorer. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. ये चीज़ होता है कि आप कुछ सोचते हैं कि लाइफ में कुछ यार प्रॉब्लम होती है, इसको डील कैसे करते हैं, टेम्परेरी तरीके से आप डील करते हैं. परमानेंट सोल्यूशन महंगा लगता है थोड़ा सा. बाद में होती है प्रॉब्लम इतनी डेप्थ में बढ़ जाती है. सपोजिटली हेल्थ के बारे में, आप हेल्थ को इनिशियल लेवल में अवॉइड करते हैं एंड उस समय वो क्या पता कम चार्ज करती, बट बाद में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेवल पे हो जाती है.
एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपकी जो सेविंग इनकम्स होती हैं, बोलते हैं ना कि यू आर जस्ट टू हेल्थ इशू अवे फ्रॉम द पॉवर्टी, डेप्थ में आप जाने से, तो ऐसी चीज़ होती है ये चीज़। To say that money doesn't grow on trees, I've never planted anything. Fruit is the result of someone planting a seed and caring for a tree to grow. Fruit has value. This is true in both the literal and metaphorical senses. If you want fruit or money, well, you better start planting some trees. These people think of it as free money, but finding the right seed, digging into the ground, covering it with fertile soil, watering it every day, making sure it doesn't get destroyed by insects or external elements. Until a tree is strong enough to bear fruit, it is incredibly difficult. It requires work, time, and जो आप कर रहे होते हैं attention. उसी Stop चीज़ को expecting आप fruit when you परफेक्ट बने haven't उससे करो। planted any seeds. And number 15, dying poor is a choice. Now, on average, it takes 20 years for someone to jump from one wealth bracket onto the next. Some people can do it quicker, and some take a little bit more than 20 years, but it's more than doable. The 40 years between your 20s and your 60s are more than enough time. You have more than enough strength, health, drive, and passion that you need to take the risk. Yes, there's no easy way out of poverty, but you've got the time, and time has value unless you waste it. You have no control over where you're born or how you're born, what family you get, but how you die is up to you. You have the years ahead of you, and frankly, if you're poor, it doesn't get any worse than this, okay? Poverty is freeing because you can be anything you want, yet some people choose to remain the same. We've got such a large community of people here, and many of you have made this leap in the past couple of years. So please share your experiences with those in the comments who are just starting out. What did it take for you to escape poverty? Tell your story in the comments and be that inspiration for people in need. You never know how your comment could change somebody else's life. And as a thank you for sticking with us until the end, we're giving you a bonus. Today's bonus is that a lack of money opens you up for abuse by the system. That's बिल्कुल correct. The ugly truth about money is that it's tied to your level of security. This is such a mind-blowing idea that somehow the number of made-up credits you have to your name determines how much society is willing to care for you. Rich people get away with shit that everyone else would not be able to. Most of your country's politicians are wealthy beyond imagination without being able to explain where their wealth comes from. In a system designed to screw over the little guy, your only option left is to become the big guy and help change it without changing yourself along the way. If you've been able to escape poverty or plan to do it in the next couple of years, please write the word escape in the comments so we know how many of you are on this journey. And we couldn't be any more proud of you, my friend, the Aluxers who through sheer power of will have changed your circumstances so much in the past couple of years that you are about to break free. We'll see you back here next time, my friend. Until then, take care. That's really great. The bottom 20% That's really great message at the end कि ये चीज़ होगी, आप पुअर हो, आपको ही गवर्नमेंट में टैक्सेस ज़्यादा भरना है, आपको हर चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट मतलब बैंक आपको एक तरह से लोन भी नहीं देंगे, एंड जो रिच होंगे ऑलरेडी एंड सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट भी वही करेंगे एंड उसको लोन भी इजीली मिल पाएगा। बट स्मॉल जो होता है ना, एक बोलते हैं ना स्मॉल बिजनेस, स्केल में जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनको कौन सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। ओके, और पैसा भी आपका ही होता है जो कि आप बड़े लेवल पे लोगों को, उद्योगपतियों को दी जाता है। भले इस तरीके से समझा सकता हूँ इसको मैं, बेटर वे में आप और समझ सकते हैं अपने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल अकॉर्डिंगली। सो दिस वाज द मैसेज, एंड मुझे भी ये चीज़ समझ आता है कि इनिशियल जो स्टार्ट होती है वो ये थी, आपके ग्राउंड रियलिटी से आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी होती है, चीज़ों को आपको थोड़ा सा अलग इंटेलेक्चुअल में समझना होता है। आपके जो पुराने जो एक चीज़ आपको जो माइंड में जो इमेजेस सेट हैं, आपको जो चीज़ें आपको पता है, जो लिंक बैठी हुई चीज़ों को लेके, उन सबको आपको बैरियर को तोड़ना पड़ता है एंड उसके बियॉन्ड सोचना पड़ता है, तभी आप कुछ लाइफ में मतलब जो आप पहले करते आ रहे हो उससे कुछ अलग कर पाओगे। सो दिस इज फ्रॉम डॉक्टर करन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड आगे हम इस तरीके से वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, एंड मेक श्योर टू विन एंड ट्राई टू जस्ट get out of every thing which pulls you down. So thank you very much.